Okay, so hello everyone. This video will be about functions of plasma protein. Okay, questions can be asked from this topic, important topic. Okay, so सबसे पहले remember कि 9 functions you will have to write. First function जो है maintenance of oncotic pressure. Okay, before that I want to explain you something. Okay, so ये तुम्हारा blood vessel है. Okay, blood vessel है. This is your arterial and your venous end है. Okay, so I want you to explain oncotic pressure, okay, and hydrostatic pressure. उससे okay, so basically oncotic pressure क्या होता है? Oncotic pressure proteins, as you know, colloidal molecules थे, वो large molecules थे, right? So ये जो capillary की membrane है, ये capillary की जो membrane है, ये proteins cannot cross. Okay, so suppose these are your proteins. Okay, so they cannot cross capillary ka membrane, so and also proteins will be having charges, so hence they will have a pulling force towards them. Let's suppose वो pulling force की value is approximately -15 mm of Hg, whereas water जो होगा मतलब जो fluid component होगा blood का, that will exert a force on the walls of the membrane, क्योंकि फ्लूइड की टेंडेंसी रहेगी टू गो आउट ऑफ द कैपिलरी मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली फ्लूइड विल बी लेस एज कंपेयर टू द arterial end, so fluid will have a tendency to go outside. So this is your hydrostatic pressure. Hydrostatic is on the walls of the capillary membrane. Okay, they want to go out, water wants to flow out, whereas जो oncotic pressure रहेगा that will be due to your proteins which would attract, which is attracting water. Hydrostatic pressure की value would be around 25 mm of Hg. So what you can see कि hydrostatic pressure ज़्यादा है as compared to oncotic pressure, so hence your this fluid will be going out. So what you can see कि जो मतलब हाथ से blood has come, तो वो arterial hand है, okay, and यहाँ से the fluid has come over here, okay, क्योंकि hydrostatic pressure was more. Now fluid तो आ गया, so अब यहाँ पे जो hydrostatic pressure लग रहा था that has been reduced because the water has flown inside in this is your tissue, okay, the fluid has flown into a tissue, so hydrostatic pressure hence has become less. So okay, so यहाँ पे blood flow किया, so now your hydrostatic pressure has become less, around suppose 10 mm of Hg, and जो oncotic pressure है, oncotic pressure I'm taking any random value, okay, 15 ही रहने दो, 15 mm of Hg, right? So now oncotic pressure is more. Oncotic pressure was due to proteins. Proteins, they cannot flow through the membrane, so they are attracting water. So water will come inside. Water meaning your fluid, your blood will come inside. So now your blood has come inside. Oncotic pressure was due to proteins. Proteins may be mainly सबसे ज़्यादा protein which was the protein which is present in maximum amount, that was your albumin, okay. So albumin. So albumin is exerting oncotic pressure. So now this will again come inside, okay. So again यहाँ पे fluid has come. Hope you have understood it now. So functions of plasma proteins में first function is maintenance of the oncotic pressure. Out of all the plasma proteins, especially albumin exerts colloidal osmotic pressure. अभी तो oncotic pressure you understood. Now what is this colloidal osmotic pressure? They are one and the same thing, okay. So oncotic pressure, colloidal osmotic pressure are the same thing, called oncotic pressure, okay. So normal oncotic pressure is 25 mm of Hg. So क्या हो गया, अगर now clinical perspective से अगर प्लाज्मा प्रोटीन कम हो गया, या स्पेसिफिकली टॉकिंग एल्ब्यूमिन ही कम हो गया, दिस येलो थिंग
एल्ब्यूमिन कम हो गया, सो चलिए यहाँ पे तो एनीवेज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल बी मोर, तो फ्लूइड विल गो इन द टिश्यू ओनली, बट यहाँ पे अगर एल्ब्यूमिन कम हो गया सो वीनस एंड पे भी आके तो फ्लूइड वुड बी गोइंग आउट ओनली, मतलब जो कैपिलरी है उससे द ब्लड मूविंग इज ऑलमोस्ट इट हैज़ रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, पर अब सारा फ्लूइड जो है वो तुम्हारे टिश्यूज़ में अक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट व्हाट वाज हैपनिंग कि इट वाज कमिंग हियर, बट यहाँ पे देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम, ऑनकोटिक प्रेशर मोर, सो इट वाज गोइंग इनसाइड, बट नाउ सिंस प्रोटीन्स आर लेस, सो ऑनकोटिक प्रेशर यहाँ पे भी कंपेयर टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज लेस ओनली, सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब इट वांट्स टू गो आउट, इट वांट्स टू गो टुवर्ड्स द टिश्यू फ्रॉम द कैपिलरीज, सो यहीं पे आ रहा है। सो व्हाट यू कैन सी कि ये जो तुम्हारा टिश्यू है वहाँ पे फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो रहा है, फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो रहा है, फ्लूइड का अक्यूमुलेशन, एंड टिश्यूज हाउ आर दे आर लाइक अ स्पंज, सो उनमें जितना फ्लूइड होगा दे विल स्वेल लीडिंग टू इडीमा। ओके, सो होप यू हैव गॉट इट कि मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर्स में और प्लाज्मा प्रोटीन स्पेसिफिकली मेनली एल्ब्यूमिन, ओके, क्योंकि एल्ब्यूमिन सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में है। Starling's hypothesis, this also you can add it in your maintenance of oncotic pressure वाला। Starling's hypothesis क्या कहता है, ये कहता है कि movement of fluid across the capillary walls is determined by the balance between hydrostatic pressure, which was due to water away from the capillaries going towards the tissue, and the oncotic pressure. So clinical correlation is albumin come तो oncotic pressure come, so it will lead to edema. Next functions तो they're easy. Transport function, plasma proteins carrier molecules for hormone, lipid, metal ions, drugs वगैरह. ओके, नेक्स्ट है buffering action. Buffering action, देखो ब्लड का pH is around 7.35 to 7.45. ओके, फर्स्ट वीडियो में आई हैड टोल्ड, सो वो pH को इट हैज़ टू बी मेंटेन, क्योंकि अगर एसिड्स आ गए ज़्यादा तो फिर ब्लड का pH ही चेंज हो जाएगा, दैट शुड नॉट अकर, नो। सो टू मेंटेन द प्रेशर बफर्स होते हैं ब्लड में, सो प्लाज्मा प्रोटीन्स ही है, दे ऑल्सो एक्ट एज प्रोटीन बफर्स। ओके, ड्यू टू देयर एम्फोटेरिक नेचर, मतलब कि क्या कि अगर सपोज एसिड ज़्यादा हो गया ब्लड में, मतलब H+ हैज़ बिकम मोर इनसाइड योर ब्लड, सो प्लाज्मा प्रोटीन्स व्हाट विल दे डू, दे विल एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आयन, तो ब्लड से दे हैव रिड्यूस्ड द H+ आयन, तो pH जो लो हो गई थी दे हैव रिस्टोर्ड इट। वैसे अगर H+ कम हो गया या OH- ज़्यादा हो गया, सो दे विल डू ऑपोजिट फंक्शन। ओके, सो बफर्स में विच आर बफर्स, बाइकार्बोनेट बफर भी होता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन ऑल्सो एक्ट्स एज अ बफर, एंड प्लाज्मा प्रोटीन बफर, बेसिकली यू आर राइटिंग अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन, नो, सो यू जस्ट मेंशन बफरिंग एक्शन भी होता है। रोल इन ब्लड कोएगुलेशन, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से थे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन इज हैविंग अ रोल इन ब्लड कोएगुलेशन। कैसे, फिब्रिनोजन जो होता है इट इज सॉल्यूबल, ओके, ब्लड में सॉल्युबल है, सो अगर तुमको सपोज ओके वूंड है, सो यू वांट द ब्लीडिंग टू स्टॉप, राइट, सो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए फिब्रिनोजन इज यूजफुल क्या, नो, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन द ब्लड, फॉर टू स्टॉप द ब्लीडिंग यू वांट समथिंग इनसॉल्युबल टू बी देयर so that the bleeding can stop, so hence fibrinogen is converted to fibrin which is insoluble, so fibrin which will form the blood clot. Many clotting factors are plasma proteins, they are essential for hemostasis. Deficiency of fibrinogen can lead to a bleeding tendency. Okay, next क्या, immunity and defense. immunity इसके previous video में सारे proteins were mostly synthesized by the liver, only gamma globulins by the immune system, B cells and plasma cells. So gamma globulins immunoglobulins है, they provide humoral immunity. Humoral immunity at least from a 12th you would remember कि T cells were doing cell mediated, but gamma globulin किससे फॉर्म हुआ था, B cells and plasma protein. So B cell will do your humoral immunity, they will neutralize your toxins and pathogens. Okay, so less immunoglobulin रहा, मतलब less antibodies रही, so antigens will become more powerful, hence recurrent infections हो सकते हैं. Viscosity to the blood, viscosity to blood almost 50%, plasma proteins ही ज़्यादा viscosity देते हैं to the blood. Fibrinogen contributes most. These are facts you remember. सबसे ज़्यादा रोल इन ऑनकोटिक प्रेशर was by albumin,
Viscosity is fibrinogen. न्यूट्रिशनल फंक्शन, प्लाज्मा प्रोटीन्स का न्यूट्रिशनल फंक्शन है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर दे आर प्रोटीन्स. ओके, सो दे आर प्रोटीन रिजर्व्स. मतलब इन केस ऑफ इफ यू नीड, if you are not having food, so if you need glucose, so proteins can be broken down into amino acids and then they can do gluconeogenesis. Okay, so plasma proteins act as temporary protein reserves. They are broken down into amino acids. ओके, अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर दिया उसको, एंड सपोज कोई टिश्यू को इंजरी हो गई है एंड इफ़ यू नीड अ पर्टिकुलर प्रोटीन, सो प्लाज्मा प्रोटीन को ब्रेक करो इनटू अमाइनो एसिड विच विल सिंथेसाइज द रिक्वायर्ड प्रोटीन, broken down into amino acids used for tissue repair and growth, important during starvation, gluconeogenesis. Role in ESR, हाँ, this is important. ESR मतलब erythrocyte sedimentation rate. एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, राइट? सो ओके, प्लाज्मा प्रोटीन का कुछ रोल है इन रिलेशन टू आरबीसीज ऑल्सो. ओके, व्हाट इज दैट रोल? सी, ओके, सी, आरबीसीज, they are having negative charges on them. These negative charges which are present on the RBC, it is known as zeta potential. Okay, RBC में negative charges है which are called as zeta potential. So अगर बहुत सारे RBCs they have come together, so all are having negative charges, so they will repel. Okay, वो क्या करेंगे? repel करेंगे एक दूसरे को. मतलब they will, they would not want to stay together, they will repel. So plasma protein, so what is the function of plasma protein? Plasma proteins mainly globulin and fibrinogen. बोलो क्या करेंगे? What will they do? They'll do they will come and they will neutralize this negative charge which is present. Okay, they will neutralize the negative charge. So now they won't repel. The RBCs उतना repel नहीं करेंगे. मतलब basically how will they neutralize the charge? They will, they will basically cover the charge. They will shield the charge. तो RBCs उतना repel नहीं करेंगे. So they will stay together. Okay, so ये होता है and they will stay together. So if this is a tube, so RBCs ऐसे. Okay, so how does this appear? This appears like a stack of coins. Okay, which is known as rouleau. Okay, it is not Rolex, you pronounce it as rouleau. Okay, so rouleau formation will occur. Rouleau meaning roll of coins. Okay, इसके लिए ये. So RBCs, they are not repelling, so they will appear as stack of coins. So इसका मतलब clinical perspective से क्या importance है कि plasma proteins are helping in erythrocyte sedimentation, but what is the significance? So okay, so imagine कि inflammation हुई है. Okay, so what were we talking about? We were talking कि clinically importance क्या है. Sorry, I had to cut the video क्योंकि अचानक से there was some noise. Okay, so कि मतलब importance क्या है इसका? So importance है in case of inflammation. Okay. Okay, so if the pathologist or the doctor is not knowing, so how will he know कि inflammation हुआ था? Wait, I'll tell you. Inflammation हुआ. Inflammation first of all, why will it occur? अगर कोई infection हो गया, okay, मतलब basically antigen आ गया कुछ, so body will have a response towards that antigen, right? So body would want कि it should synthesize, immune system से it should synthesize your gamma globulins in response, and liver से भी fibrinogen वगैरह, if there suppose bleeding वगैरह, fibrinogen वगैरह का synthesis it has to be increased. So inflammation, why did it occur? Because there was some infection. Okay, so उसकी वजह से gamma globulins have increased, fibrinogen has increased. So अगर these all have increased, so what will they do? They will decrease the they will neutralize the potential, the zeta potential on the RBCs, on more RBCs कि उनकी quantity increase हो गई है. So they will act on more RBCs. So तो ज़्यादा stack formation. So what will happen कि in such people,
when blood को हमने करेक्ट किया एंड वगैरह स्टेनिंग वगैरह की, so RBCs how will they appear? They will appear like a stack of coins. You can see this. So इससे the person can make the diagnosis कि okay, so inflammation has occurred and rouleau formation has occurred. Okay, so fibrinogen is the strongest rouleau former. Fibrinogen and globulins reduce the RBC का zeta potential, which was the negative potential on the RBC, and cause the rouleau formation, making RBCs settle faster and increasing the erythrocyte sedimentation rate. Next, other function can be synthetic and regulatory functions. So, proteins can synthesize enzymes, hormones, hemoglobin. Hemoglobin का which component? The globin component. Okay. Okay. So, अब तक plasma proteins का we have covered all the topics. We are done with constituent, plasma versus serum, origin of plasma protein function. सबसे पहले values, if you can remember. Okay. But biochem में it is important, so better remember now only. Then कितना परसेंटेज होता है, ये दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट कि प्लाज्मा 92% वाटर, 7% प्रोटीन्स, 1% अदर सल्यूट्स. देन प्लाज्मा वर्सेस सीरम. ओरिजिन, तो इट इज़ वेरी इजी, ओनली गामा ग्लोबुलिन इज फ्रॉम द इम्यून सिस्टम. फंक्शंस इज इम्पॉर्टेंट. ऑनकोटिक प्रेशर का उसमें यू मेंशन स्टारलिंग्स हाइपोथेसिस. ट्रांसपोर्ट फंक्शन ओके. बफरिंग में भी you mentioned buffering also important. Immunity defense, so you know blood coagulation, fibrinogen पता है. Viscosity में fibrinogen has the main role, and oncotic में which was having albumin. Okay, and nutritional function, erythrocyte sedimentation rate, this is also important. Okay, I have understood, I have explained you कैसे होता है, and synthetic and regulatory functions वगैरह. Okay, now one question. Okay, it has been asked. मतलब हम लोग के जब एग्जाम्स होते थे, सो दिस वाज आस्क्ड इन MCQs ऑल्सो. ओके, सो सपोज हैमरेज हुआ है, सो इट इज़ बीन आस्क्ड कि हैमरेज हो गया है, उसके बाद द ऑर्डर इन विच द प्लाज्मा प्रोटीन्स विल बी जनरेटेड. ओके, सो AGF स्टैंड फॉर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन. हैमरेज हुआ है मतलब बेसिकली ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है. सो सबसे पहले व्हाट शुड कम इनटू योर माइंड? ब्लीडिंग रोकना है कि मतलब अभी देखो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन है, तो तुम तीनों के फंक्शंस के हिसाब से यू फर्स्ट यू थिंक लाइक दैट. एल्बुमिन मतलब इडीमा. ओके, सो इडीमा क्योर करना है. ग्लोबुलिन मतलब हम लोग को मतलब जो इंजरी जिसकी वजह से हुई है, जो एंटीजन है, उसके अगेंस्ट हमको सिंथेसाइज करना है एंटीबॉडीज. ओके, मतलब डिफेंस. एंड फिब्रिनोजन मतलब ब्लड जो लॉस हो रहा है उसको हमको क्लॉट कराना है. सो ब्लड अगर लॉस हुआ है, so if you know it is bleeding. Okay, so first you will cure the edema? Obviously no. So albumin first कभी भी नहीं regenerate करना है. You have to think like this कि edema पहले you will cure, क्या नहीं. First you have to clot the blood, उसको पहले prevent करेंगे, right? First fibrinogen should come. Think in this way. Then defense proteins. edema it मतलब edema चलो बाद में करेंगे, पहले defense proteins you have to synthesize. Okay, defense. So then globulin and then albumin. Okay, you have to think like this. Many of times we think कि albumin सबसे ज़्यादा है, so albumin should be regenerated first. Okay, will be regenerated. No. Then another question is कि plasma proteins are less in infants. Why? Okay, so have they mentioned कि कोई pathological condition कि the infant is malnourished वगैरह? नहीं, मतलब इन जनरल प्लाज्मा प्रोटीन्स आर लेस इन इन्फेंट्स. तो क्यों होगा? बिकॉज सिंथेसिस पे यू शुड गो नो. लेस क्यों हो रहा है? बिकॉज सिंथेसिस कम है. तो सिंथेसिस क्यों कम हो सकता है? मेनली प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय योर लिवर. ओके, सो आंसर शुड बी हेपेटिक इमैच्योरिटी. ओके, एंड नॉट बिकॉज कि दे आर डिस्ट्रॉयड वगैरह. ओरिजिन पे यू गो नो. इन्फेंट है, इज अ स्मॉल चाइल्ड. ओके, so yes, we are done with plasma proteins, and now next video will be about hematopoiesis, then your RBC. Okay, so yeah, if you've understood, so please like, share and subscribe. It would really mean a lot. Thanks for watching.